जब मैंने साड़ी पर ब्लॉगिंग करना शुरू किया, अपने इंस्टाग्राम पेज पर साड़ी पर लिखना शुरू किया, इंडियन टेक्सटाइल्स पर लिखना शुरू किया और अपनी अलग कहानियाँ सब बतानी लोगों को शुरू की, प्रोफेशन के बारे में, परिवार के बारे में, एक वुमेन प्रोफेशनल के बारे में। तो बहुत लोगों से, दुनिया के हर कोने में ऐसे लोग जो साड़ी ब्लॉगिंग करते हैं, उनसे मेरी दोस्ती हुई। तो लंदन में भी बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं हर बार जब आती हूँ मिलती हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये साड़ी पहनने वाली महिलाएं जब मिलती हैं तो क्या बात करती हैं? सिर्फ साड़ी की बात करती हैं, फैशन की बात करती हैं, बिंदी की बात करती हैं, गहनों की बात करती हैं? नहीं। देखिए, साड़ी हम लोगों को बहुत करीब ले आई, बस साड़ी माध्यम थी और सब लोगों ने अपनी अपनी तरीके से साड़ी को बचाने के लिए उन्हें क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब करते हैं। लेकिन हमारे जैसे कुछ महिलाओं की एक कम्युनिटी सी बन गई। तो जब हम मिलते हैं बहुत सी बातें और करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जो कुछ हम लिखते हैं साड़ी के बारे में तो लिखते हैं, साड़ी हमेशा हमारे पोस्ट की, हमारी ब्लॉग की नायिका सी रहती है। सारी महिलाएं प्रोफेशनल हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम कर रहा है, कोई आर्ट हिस्टोरियन है। I grew up British, Bengali or Bangladeshi in this country. I grew up in a community in a city that was very racist in the 80s. So if my mum wore sarees through my whole childhood. It's only now that she's stopped wearing sarees as much. But when we would go out with my aunties and mum, you know, wearing sarees, would often get racially abused because it just wasn't seen. It just wasn't seen. So as I was growing up, like wearing a sari, you kind of had to take a risk on what would happen to you externally. Okay. But then I went to Bangladesh and I spent 2 years in Bangladesh and I would see my teachers wearing saris and all my cousins wearing saris, and the Jamdani sari and the weave was one sari that really stood out to me. But I didn't know what it was. I didn't know how to get hold of one. But I remember what was in the, in our bari, we had a very long veranda, and there was, the washing line was hung from one end to the other, which was more than 7 meters long. It was massive. And after the women had all gone to the pukur and had their baths or showers, they'd squeeze their saris, they'd put starch on them and then hang them straight across the whole veranda. And as kids, we would play with that. And my mum had a peach color sari that I just absolutely adored as a child. So I suppose for me, there was this sort of real mixed identity. On the one hand, as a British woman, it felt really maverick or brave to wear a sari in your daily life because you were sort of wanted to assimilate. The power suit was seen as the thing that you wore as a professional woman. The sari was the thing that you wore on special occasions. And yet on the juxtaposition, the other side, I saw all the women in my family look glamorous in saris. So for me, the sari community gave me that back, gave me my identity back. And when I wear a sari, I feel like I come back to myself, regardless of what I've been doing in the world. As soon as I put a sari on, it's like a big hug. And then I was saying to Vijay earlier, so I collect all the sari group's posts. So I might see that you've posted something, Sonia might have posted something, and it's my Sunday morning reading in bed. So my husband brings me up a cup of tea on Sunday mornings, and I sit and I read everybody's posts and learn a little bit and find out who's doing what. And it really does, it just means a lot. It just means a lot to be connected to women internationally in that way. And as a British Bangladeshi who's sort of got a mixed identity, it's strengthening and empowering. जब मैंने न्यूज़ करनी शुरू की दूरदर्शन पर, और यहाँ पर भी मैं इंग्लैंड में जब एशियन मैगज़ीन कर रही थी, तो जबकि वो प्रोग्राम जो था वो बीबीसी पे होता था, लेकिन क्योंकि एशियन था हमें साड़ियाँ पहननी होती थी। यहाँ पर इतनी साड़ियाँ थी नहीं मेरे पास, तो जितनी भी और प्रोड्यूसर्स थे, जितनी भी मेरी दोस्त थी, मैंने सबकी साड़ियाँ बीबीसी पे पहनी हैं। और वो फिर एक तरह से देखा जाए तो बीबीसी में भी वो प्रोग्राम अलग हट के लगता था, क्योंकि प्रेजेंटर जो थी वो साड़ी में होती थी।
इसके बाद हमने वहाँ पर इंडिया में जब मैं न्यूज़ पढ़ती थी तो वो उस ज़माने में ना कोई सीरीज़ होती थी, कोई इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं होते थे जहाँ ड्रेस्ड अप आप लेडीज़ को देखें। तो न्यूज़ में लोग बाकायदा इंतज़ार करते थे कि आज न्यूज़ एंकर कौन सी साड़ी पहन के आई है, और फिर अगले दिन ग्रुप्स में ये डिस्कशन होता था कि उसका वो बॉर्डर अच्छा था, उसका ये बॉर्डर अच्छा था। और मैंने बल्कि मैं आज परवेज़ से ही कह रही थी कि आई स्टार्टेड इन द ब्लैक एंड वाइट डेज। तो ब्लैक एंड वाइट में आपको किस तरह की साड़ी पहननी है, प्रिंट है, कैसे आएगी। आप ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स भी अगर देखें तो वहाँ उसमें मेकअप अलग होता है ब्लैक एंड वाइट का। उसी तरह से किस तरह की यू सी दीज ओल्ड हीरोइंस वेयरिंग georgette sarees with satin blouses and things like that. What is going to look nice on the film was important. तो उस तरह की हम लोग साड़ी पहनते थे। तो बाद में तुमने देखा होगा ज़्यादातर हम लोग बॉर्डर की पहनते थे क्योंकि सिर्फ इतना ही दिखता था। इतना ही हाँ, और तब से मैंने एक पिन लगाना शुरू किया अपने पल्लू में, बिकॉज आई डिड नॉट वांट इट टू ऑन कैमरा। नहीं तो बट मेरा खुद का जो स्टाइल है, और मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा पिन करके और उसको एक फॉर्मेलिटी देने की जगह, आई थिंक द ब्यूटी ऑफ अ साड़ी इज़ द फ्लूइडिटी। तो जिस तरह से आप पल्लू डाल रहे हैं और थोड़ा खसक रहा है, लटक रहा है, उसमें वो एक अलग ब्यूटी है। और जिस तरह से बहुत से लोग अपने बालों को संभालते रहते हैं, हम लोग अपनी साड़ी को संभालते रहते हैं। 70s का ज़माना सबसे फैशनेबल था, ब्लैक एंड वाइट था लेकिन सबसे फैशनेबल था। जीनत अमान, टीना मुनीम, मतलब इस तरह के, मुमताज़ की वो साड़ी, तो वो बहुत फैशनेबल। और हमारे सीनियर्स बहुत स्मार्ट थी, सब स्मार्ट थी, पर सब वेस्टर्न कपड़ों में। और मुझे रोना आता था, इसलिए नहीं कि मैं मिस कर रही थी मम्मी पापा को, रोना इसलिए आता था कि पहली बार मैंने ये रियलाइज़ किया कि भाई कपड़ों पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं मॉनिटर थी, मैं एमपी बोर्ड की टॉपर थी, तो क्या हो गया? आई वॉज सो लॉस्ट। मुझे लगता था मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा यहाँ, मैं कौन हूँ। और ऊपर से बहन जी का खिताब मिला हुआ, हमारे जैसे और भी थोड़े बच्चे थे वहाँ पे जो छोटे छोटे शहरों से आए थे। तो मैं ऑब्ज़र्व करती रही बहुत सीरियसली लोगों को, और मुझे लगा कि मैं कभी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन पाऊँगी। मेरा मेंटल मेकअप ही नहीं था, किसी को देखा ही नहीं मैंने अपने घर में। पर बंगाली लड़कियां थी लोरेटो कॉन्वेंट कैलकाटा की, बहुत स्मार्ट, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी, सीनियर्स भी, वो सब साड़ी पहनती थी। मेरे साथ जो बैचमेट्स भी आई थी, जो बिल्कुल एक दिन में वहाँ रच बस गई, वो सब साड़ी पहनती थी। तो मैंने अपने दिमाग में ये बना लिया कि घर जाऊँगी तो मम्मी से साड़ियाँ ले आऊँगी, यही सबसे सेफ़ है। तो मैं 7 दिन के लिए 7 साड़ियाँ, और मेरी मम्मी मैचिंग ब्लाउज़ नहीं पहनती थी, छींट के ब्लाउज़ पहनती थी, तो वही अनमैच ब्लाउज़ वो साड़ियाँ मैं लेके आ गई। और जब पहनना शुरू किया, रैगिंग में सबसे पहला, फ्रेशर यू डिडंट हैव अ मैचिंग ब्लाउज, व्हाई आर यू वेयरिंग समथिंग लाइक दिस। लेकिन धीरे धीरे वो मेरा स्टाइल बन गया। उसी समय क्या हुआ, बाल बहुत बड़े थे, लंबी चोटी बनानी पड़ती थी। मेरी रूममेट बनाती थी, बहुत अच्छी थी। तो एक बार मैं नहाते हुए जूड़ा बना के आ गई, तो उसने कहा ये बहुत अच्छा है विजया, मेरा भी काम कम हो जाएगा, चोटी नहीं बनानी पड़ेगी, दिस लुक्स नाइस। तब से ये जूड़ा वैसे ही है। फिर उसके बाद शबाना आज़मी की फिल्म आई अंकुर, और बड़ी सी लाल बिंदी लगाई, बहुत इम्प्रेशनेबल एज था। और पैरेलल सिनेमा से हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस थे, शबाना, स्मिता, इन सब से। तो हम सब कमला नगर गए, वहाँ से हमने पाउडर बिंदी खरीदी, और हम सब ने 3-4 लड़कियों ने ट्राई किया। तो औरों ने तो छोड़ दिया, एक आध वीक के बाद मेरा ये रह गया। तो अब क्यों साड़ी, तो मुझे अचानक लगा जिससे कोई पावर मिल गया मुझे। मैं जब डिबेट्स में जाती थी तब तक, हाँ, लोग कहते थे आईपी कॉलेज से कोई आती हैं विजय लक्ष्मी, बहुत अच्छा बोलते हैं। सडनली जितने लड़के आसपास थे, अच्छे डिबेटर थे, सब कहने लगे विजय तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। बोलने के साथ साथ कपड़ों पे भी कॉम्प्लीमेंट मिलने लगा। तो साड़ी ने तो मुझे, जैसे मैं सोचती हूँ, अचानक से एक ऐसा कॉन्फिडेंस दे दिया कि जिससे मैं उतने बड़े कॉलेज में सरवाइव कर गई। जब 5 साल बाद मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा तो मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट थी, मैं कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट थी। और वो पहला दिन मेरा मेरे चूड़ीदार कुर्ते में, और वो आखिरी दिन मेरा मेरी साड़ी, बिंदी और जूड़े में, बिल्कुल अलग। तो उसके बाद क्या है कि मैंने कभी बहुत साड़ी के बारे में सोचा नहीं, वो तो मेरा हर रोज़ पहनने का मेरा ड्रेस था।
टीचर से इंस्पायर्ड थे, इंदिरा गांधी से बहुत इंस्पायर्ड थे। सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड मेरे समय के लोग प्राइम मिनिस्टर से थे, उस समय की प्राइम मिनिस्टर से। तो फिर अपनी नौकरी करने लगे। और तुम गज़ाला जानती हैं कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में बेस्ट ड्रेस्ड वुमेन होती थी, तो उनको देख देख के भी कुछ सीखते रहे, पहनते रहे, लेकिन साड़ी बैकग्राउंड में रही, अपना काम धाम करते रहे। आते जाते रोज़ एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलता था। कॉम्प्लीमेंट खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कोई माने या ना माने, बहुत ज़रूरी है। तो वो लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलता रहता था। बाहर से बड़े बड़े राइटर्स आते थे, फिल्म मेकर्स आते थे। गुलजार जी मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते थे कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी है। जब जब मैंने उनको रिकॉर्ड किया तो आई हैज़ टू फील सो गुड। तो ऐसे सब चलता गया। और फिर धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि साड़ी सिर्फ मुझे सुंदर नहीं बना रही है, साड़ी मुझे पावर देती है। जब मैं साड़ी पहन के खड़ी हो जाती थी तो मुझे लगता था मैं 20-50 लोगों को हैंडल कर लूँगी। तो वो पावर जो मुझे साड़ी से मिलती थी वो मेरी पावर ड्रेसिंग का एक सहारा बन गया। साड़ी के अलावा कभी मैंने कुछ और पहना ही नहीं। When I was a very small girl, I really used to love sari. Every time my mom would go out for shopping and change us ghar ka sari, I would drape that sari. And my mom would eventually will know that तुमने साड़ी पहनी थी ना ये. I said, how do you know? She said, because the folds are different. This is not how I have folded. You have draped the sari. So somewhere along the line, पता नहीं, I wasn't very buying saris during marriage. Of course, you buy sari and all that. Then we came to UK, and obviously I don't know where to buy sari. My visits to India was like once a year, short time, visiting all the family and friends. So there was no time to buy sari. I would buy occasionally for someone's wedding or some functions. So all my actual sari journey started from 2018, and thanks to Insta and thanks to my son who created my account. And then I started following all the sari divas. Of course, once I was on Insta, I followed so many, like well knowledgeable ladies, and they used to share not only about the weaves, but even the sources. For example, Sonia. And because she was in UK and she was buying saris online, so all the sources that she would buy, if I could afford that, I would definitely buy it with my eyes closed, because I know this is a trusted source, and that's how I built up my collection. Odisha weave के लिए तो हमारी Odisha queen है Vijayadi. I learned everything about Odisha weave and I started shopping wisely. My son, he's like, because last year we went to USA and I met other Insta friends, Lalita and Lalita. So when I said we are going out for a meal, I'm going to meet one Insta friend, and he was like, how do you know her then? But I said, I see her on pictures on Insta. And you're going to see her and meet her, have a dinner with her. I said, yeah, that is how Insta friendship is. Yeah, and my husband's reaction is one good thing, because I have a Ganesh at home, so a lot of people visit my home, and they always praise my sari collection, and I wear a sari 7 days. And they said, how do you know all these saris, how you buy online without even touching the sari and all? So I said, I joined Insta University and I learned. So one lady asked me, which university? So my husband said she has joined an Insta University and she has enrolled herself in a course which is a very expensive and never-ending course. So that's how my journey is continuing. I'm still learning and I'm collecting saris wisely. In 2014, 2015, I actually started working on an Excel sheet that by state, every state had a list of the weaves and then had a list of work. So chicken curry would be work, or pulkari would be work, but the weave would be Kanjivaram or the Paithanis or anything else. And so I just started doing some more research at that time from a lot of secondary sources, because even in Singapore not many people wore saris, and I decided to be very adventurous, and I was part of a Facebook group, and so I posted up saying anybody who's interested in learning how to wear a sari,
please come to my house for some tea and I'll show you, you can take a look at different weaves and we can, wear them and then sit around and have some tea. And there were so many people who wrote in, so we ended up having a series of days of smaller groups. And, then you realize that not many people have felt the difference between a Chanderi and, like a Maheshwari, and, even though they're from the same state, or, how different they might be, or soft silks are different from, the Banarasis and the rest. So that enthusiasm was amazing. And I think I was most touched by one of the ladies, a young Australian lady. She came with her newborn baby and she saw a sari that was a digital printed crepe or georgette or something, and it had a pearl border and it came with a little bustier blouse and everything. And she loved it so much, she asked if she could borrow it to wear it to her daughter's christening in Australia. So that sari traveled back to Australia in a few weeks and got worn, and she shared the pictures, and it just made me realize that as a garment, it's not just people from South Asia who are fascinated by it. Some of the biggest film stars in the US and Europe have been photographed in a sari. The queens, the Maharanis of the world have worn saris at some point of time or the other. It's such a graceful garment. When I retired in 2019, I had 5 retirement parties, and for 4 of them I wore saris, because one was at work in the daytime in the department. And people who had never seen me in a sari were quite surprised, and they said, "Oh, you look like a model," because it just transforms you. Yeah. The moment you wear a sari and you wear a bit of jewelry with it, and I won't relate some comments some of the guys said, because they saw parts of my anatomy they'd never seen before. But it was good fun, and I still, and now my relationship with sari, sadly, is that I don't wear it that often. But every time I go to India and I come back, my daughter says, "So what shopping have you done, Mom?" I said, "Oh, I bought 6 new saris." That's the only thing I shop for in India, new saris. And it's an eternal garment. And for me, at least, it was part of my everyday life. And through Vijay, I've learned how more special it is really now. I don't have a Paithani sari. My mother was going to buy one for me last year before she passed away. Oh. That's one sari I don't have as yet. ग्लोबल हो गई दुनिया, इतने तरह तरह के फैशन आ गए और वेस्टर्न कपड़ों ने बिल्कुल हमारे यंगस्टर्स को जकड़ लिया है। तो उससे निकलने का तरीका क्या है? मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कुछ यंग लड़कियां हैं जो साड़ी पहनती हैं, वो साड़ी को जैसे भी उन्हें अच्छा लगता है वैसे मोड़ मार के अलग तरीके से कुछ ट्राइबल ड्रेप्स की तरह वो पहनती हैं। और सबसे रेवोल्यूशनरी चीज़ जो है इसको कहते हैं अन ब्लाउज़। खैर मैं तो अभी भी ट्रेडिशनल तरीके का ब्लाउज़ पहनती हूँ, लेकिन वो लोग टी शर्ट के साथ, कुर्ते के साथ, शर्ट्स के साथ, किसी के भी साथ साड़ी पहन लेते हैं। पेटीकोट भी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप पूरी तरह से लिबरेटेड है। आपके कपड़े ऐसे हों कि आप लिबरेटेड फील करें। साड़ी में आप बंधे हुए महसूस करते थे, तो अब नए फैशन के हिसाब से उन लड़कियों ने इतने तरह तरह की, उनकी इतनी बढ़िया ब्लॉगिंग साइट्स हैं कि वो लिखती हैं तो लोग उनको देख देख के अब उस तरह से यंग लड़कियां साड़ी पहनने लगी हैं। ऊंचा पहनती हैं साड़ी तो जूते में आने की ज़रूरत नहीं है, पेटीकोट ढूंढने की, मैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लाउज़ मैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस साड़ी उठाइए, उसको बांध लीजिए जैसा आपका अच्छा लगे, सीधा पल्ला, पीछे का पल्ला, टेढ़ा पल्ला, आदिवासी की तरह, जैसी भी। हिंदुस्तान में हज़ारों तरह की ड्रेप्स हैं। वो ड्रेप्स जो चली गई थी, जिसको एक तरह से जो अपने आप को सभ्य समाज कहने वाले ने नीवी साड़ी जिन्होंने ईजाद किया था, अब वो पुरानी हो गई समझ लीजिए। इस तरह का स्टाइल तो एक तरह से पुराना ही हो जाएगा मुझे लगता है कुछ सालों में। और वही नया जो स्टाइल आ रहा है साड़ी को अनब्लाउज करके पहनने का, वो चलेगा असिमेट्रिक ड्रेप। ये सिमेट्रिक ड्रेप है, वो ड्रेप होगी असिमेट्रिक। साड़ी रहेगी ज़रूर, ऐसी हमारी उम्मीद है कि इन सब जो हम लोग
इतनी कोशिश कर रहे हैं, उससे कम यंग लड़कियों ने कोशिश तो की कि एक नए तरह का ड्रेप लाएं, तो साड़ी अपने नए अवतार में बची रहे तो भी बहुत बड़ी बात है।